centre of the court, and then waiting for that shorter lift from Alaksha to finish it off. Hey guys, what's up? Welcome back to the Sports Republic. दो लोग मेरे साथ, they're joining for the first time. Shushrut is often in the comments of the channel. Shushrut, it is so good to see you on the other side today. That's true. And that is what, the Sports Republic, that is what we are trying to do, get more and more fans to talk about, sport that rolls the sports culture, rolls it faster in India. And that is what our process is. But thank you guys for joining. This is even special because we are talking about Manchester United. I don't know how special it is right now to talk about Manchester United, क्योंकि हम लोग को राइवल्स फैंस के सामने डिफेंड करने में कुछ भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है आजकल, है ना? मतलब बस हिस्ट्री बची है बस हमारे पास 20 टाइटल बचे हैं बस, एंड वो भी इस साल पता नहीं, आई डोंट नो, आई विल सी. आखिरी में हम लोग तुमसे बात करेंगे. डू यू थिंक कि लिवरपूल इस बार हम लोग को इक्वलाइज करती है 20 टाइटल्स, और आई थिंक मैन सिटी? आई विल गेट योर प्रेडिक्शंस टू द प्रीमियर लीग सीजन इन द एंड, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैन यूनाइटेड. तो भाई नया मैनेजर आया है, द ब्यूटीफुल बॉल हेड, who is Eric Ten Hag, ex-Ajax manager. Sorry? Best ball manager in Manchester. Best ball manager in Manchester. At least he's completely bald, not half bald. Yeah. So yeah, he's here. He's here to play the Dutch way. Total football, as you say, Cruyff traditions. वो सब है, Barcelona की history, Ajax की history, वैसा type का football. Early impressions कैसे लगे तुम लोग को एरिक टेन हाग के? What do you think his football is shaping up like? Do you think players have improved? I'll go to Utsav first. Utsav, can we start talking about how and क्या hopes लग रहे हैं अभी तक जो देखा है उससे? See, apart from leaving the Glazers behind, the manager is like, he has shown some improvements और बहुत अच्छा काम कर रहा है. And like you can see, he has like changed, he has kept the formation the same, like 4-2-3-1 जो last season भी थी. And that's the good part about him, ki like everywhere he goes, he keeps like, he adjusts with the players and not कि मुझे ये चाहिए अब मैं टीम पूरी वैसे खिलाऊंगा. So like the ready available players अभी जो we have our midfield में McTominay and Fred. I hope we get better midfielders, but ठीक है. So he has used two of them very. I feel हम लोग इतना McFred कर चुके हैं वो कि हमने ये तो देखा है भाई, मैकफ्रेड थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, इट्स नॉट फेयर टू फ्रेड एक्चुअली टू जस्ट attach his name with McTominay. Fred is actually a useful player and can be an actual squad player for United season going ahead, where I don't know what McTominay offers really. So I think हम लोग थोड़ा सा unfair होते हैं फ्रेड पे हमेशा, McFred बोल के. But yeah, continue. So I just wanted to sort of get in there and defend Fred there a little. Yeah, so as you said, like apart from McTominay, if we like detach Fred from him, he even played well with Van de Beek in the previous couple of matches of the friendlies, man. Like where Van de Beek and Fred were on the holding this thing, and then आगे Bruno या Eriksen were there ऐसा. So like Fred has that potential abhi, and like under a good manager, Eric Ten Hag has showed कि he can do very well. And like we have sorted our front three. Like Martial has started playing the striker role. पहले he was playing on the left, so that's good. Then Malacia has come अभी पता है ना तेरे को, recently I just got this news, he's out the opening game with some little hamstring injury, Martial. So it's classic Martial. I don't know how we are हम लोग वापस चले जाते हैं कि अरे Martial golden boot, क्या Ballon d'Or clause, or we still are in the same Martial memory. But we shouldn't forget कि Martial का apart from his form and everything, is work rate, everything, the question is also on his fitness. That is also an important point. Yeah, Shushrut, anything else you want to add इस point पे कि pre-season में हम लोग how are we looking? So first of all, hello, hi all. Second is that looking at United's performance for the current season as per our pre-season tour, I don't think things are looking good. To be very honest, that is what I feel. We are playing aggressive football, positive football, but then in the end, our midfield is way too weak, because this is the same midfield that we are playing with since 2019, and we have lost every midfield battle with every team in the last year. Brentford से भी आते हैं भाई midfield battle हम. Exactly. So, और मतलब coming back to Utsav's point that
Eric Ten Hag की capability ये है कि he can adjust as per the current team, but we have to reinforce him with better players, because if we want to be the best, then I think there has to be few changes. And I don't see United doing good this season, I'll be very honest. देख इससे ये है कि मतलब मतलब what you said, I just want to ask you एक चीज कि हम लोग ये बोल रहे, तूने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है, how, like what is the that parameter where we judge this season from, is where we have to judge this season from कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, or is it satisfactory or not? I mean, just नया manager, suppose we get Frankie de Jong, like suppose, है ना, let's get that out of the question क्योंकि अभी signings नहीं हुई है, but let's hope Frankie de Jong आता है, ठीक है, और let's hope हम कोई या तो फिर सेस्को को साइन करते हैं या एक राइट बैक, कोई दोनों में से की, आई डोंट थिंक 3 साइनिंग करने वाला यूनाइटेड, इतनी तो औकात नहीं है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड की, इतने बड़े नहीं हुए एक सीजन में रिचर्ड आर्नोल्ड की ऐसा कर पाए तो, बट then you're just imagine कि 2 साइनिंग्स और है, then what is the realistic expectation, what will you classify कि ये सक्सेसफुल सीजन है, मतलब क्या बोलेगा? अभी बात ये हो गई है कि for us a successful season is to qualify for top 4. मतलब standards have fall down so badly कि मतलब ये सीजन तो अगर top 4 हो जाए तो I think all the fans would be very happy. top 4 तो बहुत ज्यादा expectations रख रहे हो, I think. No, so what I'm saying, वो तो basic है, minimum होना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि we are at least competing for the title. compete करते करते चलो competition बहुत हाई है तो second या third आ गए, but aim ही अगर top 4 है तो फिर तो मुश्किल ही है. No, but अगर top 4 में नहीं finish करे इस साल तो you will not consider this success as a successful absolutely season. Yes, absolutely. Utsav, because if you see ना कि हमारे ऊपर जो top 4 जो अभी हैं, चलो like Tottenham, Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, all are making so many इतनी सारी signings कर रहे हैं वो लोग, and here we are stuck with the same midfield जैसा Sushruth said from 2019. but I'm just saying कि imagine he does make that signing, he imagine that we do get De Jong, we do get a Sesko, Ronaldo बाहर गया, क्लब में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है रोनाल्डो की, बस तो फिर भी लगता है कि मतलब इट्स स्टिल नॉट इनफ चेंजेस इन वन विंडो कि मलासिया, मार्टिनेज, क्रिस्टियन एरिक्सन भी एक ऑप्शन है मिडफील्ड में, और लास्ट 2 गेम में हमने देखा है एरिक्सन को, भाई मस्त लगा है एरिक्सन तो, मतलब ही इज लुक द पार्ट बेसिकली. तो that is true, but then the problem that I have is that I don't think that the club has any intentions to do good. Even if we sign Eriksen or even De Jong, I don't think the overall atmosphere of the club is to win games or to do good. So that will pull everyone down. And but why are you saying that? मतलब कि why do you don't think Eric Ten Hag is the right man? Because manager तो main आदमी होता है. फिर then इस बार change हुआ है हमारा CEO, मतलब Woodward has gone, the Richard Arnold has come in, and the whole backroom staff has shifted. मतलब नया पूरा coaching staff भी नया है. So do you think what have you seen is नए changes में कि that has discouraged you basically? The lack of signings, that is how you gauge a season, right? As to where you would progress and what is your progress for the entire season. अच्छी है पर अभी विंडो बाकी है. But see, ये optimistic रहना, I like it. I want to be like that, but looking at the actual facts, United is neither able to sign a player nor able to sell the deadwood that we have at our club. Alex Telles बेचा अभी आज ही, just बेचा नहीं, वो लोन पे गया है, वो लोन पे गया, बेचा है, सेविया जाना था ना उसको. हाँ, without a buyback clause, मतलब without just अच्छा, मतलब सैलरी हटाइए, मतलब बस that's it. हाँ, नहीं, salary also we are playing. Are you serious? Exactly. What, some percentage of it or some percentage, part of it, not the entire so it is still, we are exactly, we are unable to offload players. But Shushruth, don't you think जो हमारे पास कचड़ा छोड़ के गए हैं ये एड वुडवर्ड, और ये जो मतलब ये 200K की सैलरी पे हैं ये प्लेयर्स,
जिनको ऑफलोड करना इतना टफ हो जाता है। हम लोग देखा है मार्कस रोहो, एलेक्सिस सैंचेज की भी सैलरी हम लोग दे रहे थे आधा या आधे से ज्यादा, आई डोंट नो व्हाट वी पेड फॉर हिम, या इंटर में। तो ये डेडवुड हटाने के लिए थोड़ा तो हम लोग को आई थिंक टाइम लगेगा, आई थिंक। और आई थिंक देयर वाज न्यूज़ की आई थिंक एक सीजन में ये पूरा डेडवुड हटाना एक विंडो में, I think it's a little tough. I think it's a little too much that we are asking from the new board especially. तो मे बी आई थिंक इन लोग को जज करने के लिए मे बी एक विंडो एटलीस्ट अगली विंडो तक देना चाहिए, अगली समर विंडो तक एटलीस्ट 3 विंडो। बीच की विंडो तो काफी ड्रेडफुल होती है प्लेयर साइन करने के लिए। बट आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक वी शुड be a little patient right now, but I understand what you're saying. I completely get what you're saying because हम लोग इतना सह चुके हैं ना ये चीज कि it is like coming back again कि मतलब अरे it's we are there again, ऐसा हो गया ना। तो but again going to the point कि उत्सव से मैं पूछा जाऊंगा, उत्सव सक्सेसफुल सीजन फॉर यू, वुड यू टेक not qualifying for top 4 but just narrowly missing out but playing really good football? Would that be a successful season for Manchester United कि अगले सीजन हम लोग, or maybe missing out on top 4 but you reaching Champions League through winning Europa League? I mean that is an option as well. Yeah. So yeah, one good sign would be कि we are playing positive football and we are attacking. This would be the most positive sign for me क्योंकि till now under Ole and under everyone we have been playing hold back and like counter attacking football. So that I don't want to see this season. I want possession based football. ये लोग थोड़ा जाएं, खेले अच्छी से, अपनी थोड़ा potentials explore करें जो है. And I guess Ten Hag would let them do this. वो करने देगा उनको because he has that potential and perfect coaches for him and to like for the players as well. So हाँ मतलब if we don't get top 4, I would still be okay कि हाँ ठीक है, we have one more year, but we are at least progressing. We are playing अच्छा football. Yeah, but just that would be a good for me. Yeah, but just on Ten Hag भाई, दोनों से एक चीज और, just one thing on Ten Hag, like एक मैनेजर ना जब आता है, जैसे लुई वैन गाल भी आया था, जोसे मरीनियो भी आया है, ओले केम पहले पार्ट टाइम आया था, then they confirmed him as a permanent this thing for the new season. और भी भाई जिस भी सीजन में क्लॉप आया है लिवरपूल में, गॉर्डियोला आया है, you understand कि मतलब I mean this is going a certain way, this manager is a certain way और हम लोग को यही मैनेजर चाहिए। या उस जस्ट इंप्रेशन से टेन हाग इज लाइक ऐसे बर्बाद प्लेयर्स, ऐसे प्री मेडोनास जैसे बोलते हैं, जिनको आदत है टू टेक इट इजी, बेसिकली क्लोज डाउन नहीं करना, मेहनत नहीं करना, किलोमीटर्स ऑन द फील्ड उतने नहीं रहते हैं, kilometers run United are in the last 5 clubs basically, the running distance wise. So I think those kind of changes, do you think कि हम लोग, क्योंकि एक टीम को सीधे काउंटर अटैकिंग टीम से सीधे प्रेसिंग टीम में बदलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा यार। I mean थोड़ा तो अगर कल्चर चेंज करना है क्लब का अगर तो, और आर्सेनल एक एग्जांपल है, आई डोंट नो इस साल किस तरह फिनिश करेंगे वो, बट द साइंस आर गुड एटलीस्ट फॉर देम. So we need to trust the process as well. Trust the process. Please don't tell me भाई 2 सीजन 8 फिनिश करके उसके बाद हम लोग को चैंपियंस लीग मिलेगा, वो प्रोसेस नहीं चाहिए मुझे इतनी लंबी। नहीं, यूनाइटेड we don't give them sorry लेवल पे नहीं जाएगा, नहीं गिरेगा, बट हाँ उतना नहीं गिरेगा क्योंकि the owners are pretty smart. The reason we are even discussing this कि what if United doesn't qualify for Champions League, would it still be a successful season? ये बस ओनर्स के वजह से ही हुआ है ये, जहाँ पे मीडियोक्रिटी इतनी भर दी है उन्होंने in the club कि we are happy to accept even if we are playing good football and not qualifying for Champions League, it is a successful season. I don't think it would work like that because Klopp, I am pretty sure in his first season he qualified for top 4 with Liverpool. No, he did not. He did not qualify for top 4 and lost the Europa League final to I think Villarreal. I think that time. So I think he was 5th or 6th whatever. 6th रहे होंगे और उसके next season पे वो लोग 4th आ गए थे. And as far as I know, I think he joined Liverpool mid-season. Yeah, थोड़ा सा पहले mid-season कि not exactly mid-season, but I think 8 games in he joined Liverpool. I think 8 or 9 games. So he could not work on transfers. And also it was not his team, but this guy had an entire transfer window wherein the club was not able to provide him any players. मतलब De Jong के लिए अगर 2 महीने से ज्यादा अगर ये ट्रांसफर सागा चल रहा है, इससे बोरिंग चीज दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं है भाई, और यूनाइटेड और ट्रांसफर सागास आर लाइक
the match made in heaven. वो तो होना ही है हर सीजन एक तमाशा exactly. तो यूनाइटेड का होना ही है. गाइटान से चल रहा है. की बात है यहाँ पे. Look at Barcelona, who's equally in turmoil. मतलब equally. probably the Barcelona is the worst run club. मतलब equally क्या United तो फिर are still better. They are the opposite of our owners, Barcelona के. मतलब वहाँ तो ओनर नहीं है, प्रेसिडेंट होता है. बट वही तो बात है, इंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है उनका कि दे हैव टू बी रेलेवेंट एंड दे हैव टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द यूरोप. दे हैव गॉन ऑल आउट फॉर दैट. ये ट्रांसफर विंडो में मतलब उनके पास पैसे नहीं है, तब भी दे आर साइनिंग प्लेयर्स होपिंग कि दे वुड विन समथिंग एंड दे वुड बी एबल टू चेंज देयर फॉर्च्यून्स. बट इफ वी आर टेकिंग 2 months फॉर द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड टू साइन अ प्लेयर which is around 2 months, so I don't think that's a positive sign. और ये तो नीचे जाता ही जाएगा ये सिचुएशन. यू रिमेंबर कि एक टाइम था हम लोग यूरोपा लीग में थे, वी साइंड पॉग्बा, लाइक यू नो दुनिया की मतलब exactly. और अब नहीं हो रहा है ऐसा. अब क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है. यू नो दैट द क्लब प्लेयर्स आल्सो नो, देयर एजेंट्स नो कि ये क्लब इज इन यू नो डायर शिट और ठीक से नहीं चलता है ये क्लब. और यहाँ पे प्लेयर को लाओगे तो आपका हु इज द लास्ट प्लेयर यूनाइटेड जो आके इंप्रूव हुआ है प्लेयर? कोई भी नहीं. कोई एक अपनी एक स्टेज पे आता है. दे डोंट, नोबडी गोज सीलिंग. किसी प्लेयर का ऐसा नहीं होता. एवरीबडी गोज डाउन और बेचना पड़ता है उसको. सो इट्स अ बैडली रन क्लब. और किसी भी प्लेयर को परसुएट करने में भी अब प्रॉब्लम होने लगी है यूनाइटेड को कि हमारे पास आने के लिए. सो द सिचुएशन इज बैड. ऑफ कोर्स कोई वो नहीं है. होपफुली दिस मैन, आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ. I have a lot of faith. You know, before it starts, you cannot be defeatist. यार मतलब ठीक है, बाद में कुछ अलग सिचुएशन समझ में आए, कुछ सिग्नल्स देखे हम लोग को which are not good, तो समझ में आता है. बट आई थिंक लेट्स गिव दिस मैन अ चांस. आई थिंक यार जो रिजल्ट्स इसने यूरोप में, यू नो, ही इज डन विद आयाक्स, लाइक विद आयाक्स, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, चेल्सी, यू नो द बिग क्लब्स. ही हैज ऑल बीटन ऑल द बिग क्लब्स इन यूरोप. और आई थिंक दैट गिव्स मी अ लिटिल बिट होप कि ऐसी टीम्स को, एंड यू सी जो भी प्लेयर्स आयाक्स से the people used to buy, they've just worsened under other clubs. Ki dekhega tu, you know, even Frankie not as good as in Ajax. Elite not as good. ZH not as good. So these players, I think Van de Beek, he plays Van de Beek. Yeah, he plays. He makes players better. So you know that is a quality like Guardiola ki मतलब Zinchenko को भी खिला के लीग, और you know क्या नाम था, डेल्फ को भी खिला के लीग. तो मतलब वो सब, दिस इज समथिंग, इट्स अ पॉजिटिव साइन आई थिंक. और आई थिंक द प्लेयर्स आर जेलिंग. आई थिंक ऐसा लग रहा है दे आर कमिंग टू टर्म्स विद यू नो हिज फुटबॉल. आई थिंक समवन, आई डोंट नो यार, यूनाइटेड के प्लेयर्स इतना पीआर फ्रेंडली है कि समझ में नहीं आता कि कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि दे, as in the media as well in England, is such that they will only support players or talk good about players who are providing them information within the club. Right. The people who don't do it, they talk bad about them. Yeah. But again, talking about Ten Hag, probably I just forgot one point, is that the one thing that excites me about Ten Hag is that he develops youth. And United currently we have good amount of youth players, wherein we could see them last season as well. And hoping कि if ये जो बड़े साइनिंग्स है अगर नहीं हो पाए, कोई तो एक ऐसा उड़ गया एकदम ही रैंक्स में से और अपना बेस्ट प्लेयर बन गया, ऐसा कुछ टर्न अराउंड अगर होगा तो फिर नथिंग लाइक दैट. वी डोंट नीड अ डे ऑन गिफ्ट. जेम्स गार्नर अगर, या गार्नर तो ठीक है, मैं गार्नाचो पे आ रहा था. गार्नाचो ने परफॉर्मेंस जो दी है उस दिन, तो भाई बहुत सारे होप्स रेज किए हैं उसने. बट या बट अगेन द होल थिंग नाउ आल्सो एक और प्रॉब्लम है. जस्ट वांट टू मूव ऑन टू द अदर थिंग, द एलिफेंट इन द रूम व्हिच इज रोनाल्डो राइट नाउ एट दिस मोमेंट. ऑल ओवर मीडिया वो पागल हो गया, कुछ भी डाल रहा है एक तो अपने सोशल मीडिया पे. और द क्लब इज सेइंग समथिंग एल्स, हिज एजेंट इज सेइंग समथिंग एल्स, मीडिया इज सेइंग समथिंग एल्स. हाफ टाइम पे चले जाता है वापस. तो इट्स अ मेस. सर एलेक्स आए थे, आई डोंट नो कौन कौन आया था उस दिन कैरिंगटन में. पहले दिन कौन आया था, और भी कोई आए थे, कैंटोना. हाँ, सबको. आई डोंट नो what the hell is going on. So that's a situation that United need to resolve. What's happening, guys? Sushrat, what do you want to happen with Cristiano Ronaldo? I want him to stay. No other option. I want Ronaldo to stay, but then I get his point as well. वो बंदा, he is not a player to stay at United, क्योंकि वो उसके जो want hai, it is too big. He wants to be the best player in the world, and United will not be able to support his desire
in that sense. And second thing, the point that you had stated कि he left at halftime, जितना मुझे पता है या मैंने देखा है या पढ़ा है, उसमें ये था कि he had an approval with the manager that he could leave at no, but the manager halftime. then said that it's not acceptable, players leaving at halftime, this is not going to be acceptable. So ये तो I don't think that's the case. No, क्योंकि manager has refuted that thing कि उसने permission दी थी या नहीं दी थी. He has refuted that. So I think he was not the only player who left. There were other players also. Exactly. तो उसने सबके बारे में बोला है. या सबके बारे में बोला है. उसने सबके बारे में बोला. But ये target हुआ. It is only because of the media again that I would like to say कि वो leaks देता नहीं है. वो लोगों को. वो बहुत बड़ा star है और वो naturally. But Ronaldo नहीं सब leaks देते हैं भाई. उसको मतलब everybody uses media to their advantage. I don't think Ronaldo को संत है. Ronaldo is the biggest star in the world and he's the biggest PR machine in the world. ऐसे ही कोई भी इतना बड़ा नहीं बन जाता भाई. Social media presence, of course. ही उसका भी अपना है, मतलब ऐसा नहीं है. He has his own people, Duncan Castles, ये सब है उसके भी लोग. आपको पता चल जाता है कि इसके through वो information दे रहा है. You know when it's coming from Portugal, it's authentic, in a way. But Ronaldo की situation. देखो, एक तो आप बोल रहे हो जैसे कि बट ही इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ना, और उसने इसने ये बोलना चाहिए था, तो कॉन्ट्रैक्ट में डालना चाहिए था कि इफ यूनाइटेड चैंपियंस लीग में नहीं पहुंची है तो मेरे को जाना है. ऐसा तो उसने नहीं किया उसके एजेंट ने. एंड nobody wants him. So what is the use of crying? I mean, just buckle your belt or I don't know, go to US, go to Saudi, 250 million कमाओ फिर. So I don't know. I don't want a crying Ronaldo, who throws fits at United, especially ऐसे transition के time पे. He would not be crying. For me, he's a very big professional. अगर वो रह गया तो वो खेलेगा. ठीक, वो दोनों गेम खेल रहा है अभी. सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा है कि he's trying to make United fans happy also, और फिर उसके बाद ऐसे भी signals दे रहा है मेरे को जाना भी है, कोई मेरे लिए bid करो. तो he's playing that कि अगर रह गया मैं तो I think तो he's out of options basically. अभी कोई और क्लब तो है नहीं उसको साइन करने के लिए. पैसे उतना कोई दे नहीं पा रहा है. Utsav, playing style wise, Ronaldo, Eric Ten Hag wants to press. Some teams he'll press to the goalkeeper, some teams he'll press from half line. मतलब वो जहाँ से press करता है, it will be different for every game depending on what is the quality of play, जितना बॉल पे कैसी दूसरी टीम कैसे खेल सकती है. तो Ronaldo just playing, हमने देखा Martial was closing really well. Would Ronaldo be able to do that role? Or if not, can Ronaldo is better used अगर क्लब में है कि 65 minutes 0-0 है या you're 1-0 down, एक goal down हो, and just get Ronaldo, and defenders are already scared. Yeah, but see, that's not the point of it all ना, कि we want to build a team from the scratch, मतलब एकदम starting से जिसके around build हो, and Ronaldo will be here for a year or two अगर रुका भी तो. So I don't think he should stay at United because even he can't do the Martial thing. He can't press the goalkeeper or another player because अब उम्र हो गई है थोड़ी सी, तो समझ आता है. Like he can't run the way he used to पहले. And he can't press the same way. He can't like dribble the same way and all. He is a goal scorer, that's true, but that's the point. No, only he is the goal scorer of the team. We need more goal scorers involved and more attackers involved in the play. So I to think कि मतलब it's okay कि last year भी I thought the same thing actually कि जब ओले आया था, so Ronaldo came at the same time and we just got Sancho and Varane. We were looking good कि चलो first this year we'll win it all, and then last में एकदम से he did the same thing with Juventus कि last तक रुका रहा at Juventus, and then United की हाँ चलो आ जाओ, क्योंकि City was showing interest. I don't know if it's true or not. City was showing interest or not showing, वो तो I think Mendes went to City, generated that interest. तो फिर United को लगा ये तो होने नहीं देंगे हम, तो they had to buy him basically. ये तो had to buy him. वो तो it was just an agent being good as his job, वो वाली चीज थी. But Shushud, like he was saying भाई कि pressing करेगा नहीं, Ronaldo करेगा नहीं. That is the whole point about Ronaldo staying or not. But I just don't know. I don't ask you because क्योंकि वो सेबेस्टियन हालर को ऐसा खिला सकता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेल ही सकता है भाई वैसे. नहीं? Yeah, even I agree. यार और रोनाल्डो he is the GOAT. मतलब you shouldn't be questioning his abilities. अगर given a point wherein we tell him to prove himself, he will do it.
Okay. ओह अच्छा, ये तो गलत है भाई, ये तो ब्लास्फेमी है, तू कैसे कर सकता है भाई ऐसे, ये तो ओह बार्सिलोना की क्लॉक क्यों लगी है तेरे पीछे? नहीं, गिफ्ट मिला था वो, तो क्या हुआ? तो लगा दे। अच्छा चल ठीक है, चलेगा चलेगा, तो ठीक वही है। है, जब रिक्वायर्ड रहेगा वो तो खेलेगा ही खेलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड इवन इफ फॉर अ प्लेयर लाइक रोनाल्डो, वो अगर प्रेस करने के लिए पीछे गया भी नहीं कि हाफ लाइन से प्ले बिल्ड करते हुए, उसको जरूरत नहीं है, वो पीछे रह सकता है, आगे रह सकता है, फ्री रोम कर सकता है। इट इज ऑन हिज विल, बिकॉज व्हेन द प्ले इज गोइंग टू बी बिल्ट, he is going to be in front of the goal and he's going to score that. That is a for sure, क्या कहते हैं, एक guarantee है वो. Now the problem with Ole last year was that we didn't have players who could create a game. Everybody was like कि मेरे को जितना फुटबॉल आता है मैं वही खेलूंगा और मैं बस ब्रूनो ही एक आदमी था मतलब जो बॉल कंट्रोल करके कुछ कर सकता था। ऑब्वियसली, बट ब्रूनो का भी प्रॉब्लम ये है कि उसको हमेशा कोई एक वंडर पास देना है जहाँ पे उसको एक क्रेजी पास बट देना यार है, यूनाइटेड के प्लेयर्स पासिंग ऑप्शंस भी नहीं बनाते हैं ना यार, वो भी प्रॉब्लम है, क्यों पासिंग ऑप्शंस भी बनाना जरूरी है। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि मतलब प्ले बिल्डअप करके टिकी टाका करके 1-2 करके बॉल रख के आगे नहीं प्रोग्रेस कर सकते हम लोग, हमको एक ऊपर से बॉल डाल, साइड से बॉल डालनी है या मतलब काउंटर अटैक पे ही खेलना है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग यार। वो अब होगा लास्ट सीजन अंडर ऑल वी कुड डू दैट बिकॉज़ he was not a good manager. He could not come up with a this game is plan. basically when you're counter attacking or building from the back, but I'm talking about when you're pressing from the front. Can Ronaldo do that role as like I am pretty sure that he must be more fit than Rashford and Sancho. वो तो guarantee है. Rashford, I don't know, I mean 37, yeah, I understand Ronaldo biologically जो age है उसकी, that doesn't justify his real age and everything, but I understand what you're saying, but it's an interesting situation. I hope this situation resolve हो. I mean whatever the case is, if he says, I think it should resolve before the start of the season, which is tomorrow, so I don't think that's happening, but at least before the transfer window ends, ये रिजॉल्व हो, इधर वे जा रहा है दिख रहा है। आई थिंक देयर शुड बी क्लैरिटी, और सेस्को को लाना है। वो लिवरपूल के साथ गेम देख के तो मैंने बोला जा भाई रोनाल्डो जी ले अपनी जिंदगी, सेस्को आ रहा है अभी पर कोई नहीं, अगर सेस्को आ भी गया रोनाल्डो के रहते हुए भी, वो 19 ईयर ओल्ड है, वो थोड़ी हर गेम खेलेगा, ऐसे होगा नहीं, तो उसको रोटेशन as Shashank said कि Ronaldo can play for 60-65 minutes and then a backup striker like Sesko can come in and मार्शियल को भगा ही दे यार तुम दोनों ने यार। और हाँ मार्शियल भी तो था। अरे तो नहीं Ronaldo can go, I think. No, he should not go. Even if he goes, our revenue is going to fall, wherein next season और problem होगा players. I think ये revenue, I think हम लोग यूनाइटेड यही देखती है बस, ये तो नहीं देखना चाहिए अभी। I think what the manager wants ये होना चाहिए। If the manager thinks that he will not be a problem in the dressing room, अगर वो नखरे ज्यादा नहीं करेगा और प्रेस करेगा, जो स्टाइल ऑफ प्ले उसको खेलना है उसमें एडजस्ट कर पा रहा है, तो आई थिंक जो भी मैनेजर चाहता है आई थिंक वो होना चाहिए। आई थिंक रेवेन्यू इज I think United have thought long about revenue first and what happens on the field second. That is why we are here. I think the opposite is true. अगर आप फील्ड पे अच्छे हो तो रेवेन्यू ऑब्वियसली अब आप ऊपर करोगे। इसलिए लिवरपूल इज कमिंग बैक अगेन, वेयर जो 30 साल तक लीग नहीं जीते थे, इररिलेवेंट क्लब माना जाता था एक टाइम पे। If they're playing well now, they're generating the money, so that's what happens. So yeah, pre-season में भाई अपने I just want to just get your opinions very quickly कि pre-season में what results was it? Liverpool 4-0, Melbourne victory 4-1, Palace 3-1, drew to Aston Villa 2-2, lost to Atletico 1-0 और Rayo Vallecano से एक ड्रॉ किया। हाँ तो इन सारे मैचेस को देख के तेरे को क्या लगता है यूनाइटेड का फर्स्ट सेंटर बैक पेयरिंग कौन होना चाहिए? शुड क्विकली इफ यू कैन गो फर्स्ट। If Varane is fit, I would say Martinez and Varane. Okay, and Utsav? I'll go with Martinez and Maguire because Maguire has played good. हाँ ठीक है, last season बेकार था बहुत ज़्यादा, but this season he has showed signs of leadership, of like taking the ball forward और ये सब, and him with Martinez on the left can be very good. Goosebumps. मतलब मेरे को डर लगता है भाई मैगवायर का नाम सुन के, डर लगता है मुझे। प्रॉब्लम विद मैगवायर का ये है कि he's technically speaking he's not good with ball on his feet.
No, he's not bad with the ball on his feet. He's not bad with the ball on his feet. The problem is when somebody half quick also is, running just in front of him, उसको समझ में नहीं आता है क्या करे. या तो that guy will pass him. हाँ, डिफेंसिव एबिलिटी थोड़ी कम है उसकी, और उसके पास पेस भी नहीं है कि मतलब अपनी पेस पे ट्रैक बैक इसकी कोने में ले जाए बंदे को, है ना, कि ऐसा भी नहीं. हाँ, तो वो भी नहीं है उसका. उसी समय उसको रोकना है, या तो वो फाउल करेगा या बॉल जीतेगा. उसका यही है कि मतलब, तो आई थिंक दैट्स अ बिट ऑफ अ दिस थिंग. बट वरान का भी प्रॉब्लम है भाई. वरान इज आल्सो नॉट एज गुड अ पासर एज मैग्वायर, आई थिंक सो. बट वरान का ये इज इंजरी का भी प्रॉब्लम है, आई थिंक. नॉट पासिंग तो चल मार्टिनेज लाता ही है वो पासिंग. What about भाई? वो रोल मार्टिनेज कर देगा. बेई तो जा रहा है ना. पक्का है क्या अभी? पक्का नहीं है अभी. चला ही जाएगा. मतलब कोई लॉजिक है नहीं. We have around 7 or 8 center backs in our team. But Lindelof है. Lindelof के बाद fourth choice कौन है? For now तो बेई है. But you need a fourth choice center back also. But I'm pretty sure कि किसी एक को यूथ से लेके आएंगे. तुआनज़ेबी भी नहीं है. कुछ तो करेगा. भी वापस लोन पे गया है. हाँ. या नहीं, I don't know. Injured तो था. He's not got on loan. Yeah, but he was supposed to play in this thing in the tour, but वो injured हो गया. He got injured. Even the same with James Garner as well. बोल रहे हैं कि he could go out on league on loan because he just played 1 or 2 friendlies. तो not sure कि क्या होगा. Red card in first friendly. But yeah. तो वही है. But I'm pretty sure कि we could still survive with that. We already have 4 defensive ये right. मतलब मार्टिनेज, वरान, मैग्वायर और लिंडलॉफ. इनके बीच में रोटेशन अगर करते रहेंगे तो I think it should work. And even if Martinez and Varane are one pair, if we are going ahead with that, कोई ऐसी छोटी मैच आ गई जहां पे मैग्वायर और लिंडलॉफ को वापस पेयर कर रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए मेरे को. तो वो दोनों में से कोई एक फिट तो होना ही चाहिए जहां पे ऑल्टरनेट पार्टनर उनका चेंज हो रहा है. राइट. क्योंकि एज यू सेड वरान कैन नॉट पास. अग्रीड. उसका बहुत ही थोड़ा कभी कभी पुअर हो जाता है पासिंग में, वेयर इन ही गिव्स अवे द बॉल एंड वी हैव कंसीडर्ड goals in that sense. But we have Martinez for that, and when we are playing high line or going forward, Varane has that ability wherein he could track back the player. भाग सकता है वो उसी के साथ और वो डिफेंड कर सकता है. आई थिंक वो सही बोल रहे हो. नहीं कर पाएगा. आई थिंक वो सही बोल रहे हो. एक तो मार्टिनेज रहेगा ऑन द लेफ्ट साइड. आई थिंक वो बाद में शिफ्ट होगा मैग्वायर, डिपेंडिंग ऑन द गेम आई थिंक. और आई थिंक पहला चॉइस उसमें से मेरे हिसाब से आई थिंक आई विल गो विद उत्सव. आई थिंक मैग्वायर होना चाहिए बिकॉज ऐसा प्लेयर चाहिए जो हर मैच खेलने की कैपेबिलिटी रखता हो यार, एटलीस्ट इंजरी प्रोन ना हो मतलब. तो आई थिंक इट विल बी दैट. बट लेट्स सी. एरिक टेन हाग नोस बेटर. आई थिंक आई होप सो एटलीस्ट. I mean if we are benching Varane जो मतलब तो हमारा डिफेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए. एग्जैक्टली. कोई लॉजिकल सेंस नहीं है क्योंकि ही इज द मोस्ट प्रूवन प्लेयर इन आवर टीम डिफेंस वाइज. एंड इफ वी आर गोइंग टू बेंच हिम देन आई थिंक इट्स अ बिग. सो प्री सीजन के बेसिस पे ही और क्या पोजीशंस है जिसको लगता है कि आई थिंक ऑफ कोर्स वो एक क्या वो बॉल कैरिंग मिडफील्डर. आई एम नॉट गोना से द नेम, है ना, ठीक है. जैसे वोल्डेमॉर्ट का नाम नहीं लेना चाहिए वैसे आई एम नॉट गोना से द नेम. तो उसके अलावा नेम द पोजीशन वो भी नेम कुछ भी है, वो नेम ही है यार. वो पोजीशन नहीं हो गई अब यूनाइटेड के लिए, वो नेम ही हो गया अभी. तो वो नाम छोड़ते हैं. बट बाकी अदर पोजीशंस प्री सीजन वेयर डू यू थिंक दैट वी आर लैकिंग अ लिटिल बिट, नीड साइनिंग अर्जेंटली? आई थिंक वन अदर पोजीशन probably one right back जहां पे we could sign one good enough or probably a starting right back. डालो पे भरोसा नहीं आया अभी तक. नहीं वैसे बात नहीं है. आई थिंक वी नीड अ स्क्वाड डेप्थ जहां पे उसको भी कभी कभी रेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि ही इज बीन डूइंग गुड. एंड विद द टाइप ऑफ फुटबॉल दैट टेन हैग प्लेज और ही मेक्स हिज टीम प्ले, आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज द बेस्ट दैट वी हैव गॉट. एंड जब उसको लिया था ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग out of Portugal, but nobody was able to use his capabilities to his fully except AC Milan to the fullest. Anyway, तो ये मेरे को लगता है कि ये कर पाएगा. He'll be able to do it. He'll be able to extract the talent out of Dalot and going forward. But you still think कि पहला तेरे को सबसे पहले एक साइनिंग चाहिए तो you still think it's right back?
मतलब मिडफील्ड तो if you are not supposed to name that नहीं उसको name, छोड़ के दैट इज yes, तो वो तो आ रहा है भाई, right वो back तो आ रहा है, वो तो अभी कुछ वो तो आ रहा है, नहीं आएगा वो, आ रहा है भाई, वो वो नहीं आ आएगा। रहा है, वो आ रहा है, वो रहा है, तू देख, तू आ रहा है वो। चेल्सी अगर आ गई है टॉप्स पे। रिचर्ड आर्नोल्ड की पूरी रेपुटेशन उस पे है, टेनाक की पूरी रेपुटेशन उस पे है, वो आएगा ही भाई, वो आएगा ही। ये लोग चेल्सी नहीं तो उसको चैंपियंस लीग दे विल खेलना है, पे 70, अरे नहीं 17 मिलियन सैलरी भी चाहिए हो ना, 17 मिलियन देख तो के वो ये डे भी वन पे ही देंगे। करना, डे वन पे ही करना था वो, हाँ बट वो थोड़े क्योंकि नखरे, इट्स बेसिकली गोइंग टू यू नो पालिका बाजार एंड नेगोशिएटिंग अ लिटिल बिट, इट्स लाइक एब्सोल्युटली दैट। हाँ तो मतलब अभी नहीं दे दैट्स ट्रू, सकते। बट दैट इज नॉट बीइंग रूथलेस। फॉर एग्जांपल अगर चेल्सी डे वन पे ही You're पहुंच right, you're जाती right. थी हाँ वहां पे, बिकॉज इवन सी की चेल्सी का जो अप्रोच रहा है yeah. इन दिस ट्रांसफर But विंडो, Shushant, I don't think they would have new gone to owners, Barcelona, traveled to Barcelona, agreed a deal with that's Barcelona if we haven't privately agreed a deal for Frankie de Jong. If इतनी बेइज्जती यूनाइटेड और टेन हाग तो नहीं लेगा, मतलब कि अरे नहीं एक ये अपना मेन टारगेट और उसको चेल्सी ले गए। I mean, we cannot be, Barcelona's Chelsea. नहीं दैट इज ट्रू, नहीं बार्सिलोना चेल्सी तो इट वाज विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 or 2 weeks, ये तो Yeah. 2 महीने चल चुका है, और यहाँ पे अगर वो और चला जाता है कहीं और it can तो वो also be एम्बैरेसमेंट है। it can also be Barcelona's strategy to quicken up United की, मतलब तुम पैसे दो इसके Yeah. जल्दी से कि अरे चेल्सी आ रही है, it can that can also be the strategy, Yeah, but I think definitely that पर उस पे बात नहीं करते हैं वो, that is not, वो आ रहा है, वो आ रहा है, चलो डन, वो आ ठीक रहा है। है, तो आई उसका फील नाम एक तभी लेंगे राइट जब वो बैक आ की जाएगा, जरूरत ठीक है। है। हाँ ठीक है, राइट बैक की जरूरत है, ओके प्राइमरीली, ओके। Yes. उत्सव, यू थिंक एनी अदर पोजीशन, नॉट एनी अदर, व्हाट यू थिंक, तुम्हारे अलावा तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पोजीशन है एक्सेप्ट फॉर हिम? striker. अच्छा, because you think Ronaldo is going, so you would want a striker, that is why, or otherwise also. One thing is that, and second thing is Martial's like injury record is a lot, Yeah. मतलब बहुत ज्यादा है। Yeah. If he goes, we have no one, मतलब if Charlie Ronaldo भी McNeil? चला गया, नहीं मतलब ठीक नहीं। है। अभी प्रीमियर लीग रेडी, मतलब इतना उसको अभी प्री सीजन में भी नहीं खिलाया ना। ग्रीनवुड वापस आ गया तो Exactly, that could be a possibility, which is very unlikely, मतलब बहुत ही नहीं आएगा। रेयर केस सिनेरियो रहेगा जहां पे वो वापस आएगा, बट बट वो आई वापस स्टिल आएगा डोंट तो गेट इट। he'll be very like, उसको सब प्रीमियर लीग अवे ग्राउंड्स में जब वो जाएगा खेलेगा तो he'll हाँ be like, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बूट तो कम है यार, डिफिकल्ट उसको तो होगा, बहुत कुछ सुनने वाला है वो तो, मतलब हाँ like it's a very विद sensitive मॉडर्न टाइम्स situation. वेयरइन Yeah. पहले कैसे हाँ पहले तो ड्यूरिंग पता भी नहीं अर्ली चलता आपको, 2000s एंड ऑल, पता भी वो नहीं ग्राउंड चलता। पे जाने के बाद ही सुनाई देता था, अभी तो Yeah. लोग डीएम में घुस जाते हैं Yeah, कुछ भी yeah, बोलते DM, हुए, yeah. तो तो but yeah, वो but if he hadn't done this bullshit that he did, तो यार that left hand side जो हम एंटनी देख रहे हैं, वो तो ग्रीनवुड अंडर 8-10 तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता, मतलब इट्स जस्ट ही वुड वुड हैव हैव बीन, बीन द स्ट्राइकर, oh he would have स्ट्राइकर been बन जाता so good, वो हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं जो तू बोल रहा है हाँ, ना, but that is just very unfortunate यार what happened, तो but वो yeah. एकेडमी में स्ट्राइकर ही था वैसे। Yeah, he was a हाँ number 9. हाँ, he ओले, was a number 9. वो हाँ तो डेवलपमेंट ओले के ने लिए उसको उसको विंग ले पे आया खिला रहे उसको। थे, या एग्जैक्टली। और व्हेन वो क्या अपना जो कोविड वाला सीजन का उसके एंड में ये लोग 3 खेल रहे थे जब, मार्शियल, हाँ रैशफोर्ड, ग्रीनवुड, दे वर ऑन फायर यार, yeah, एक तरह से, मतलब yeah. लुकिंग वेरी गुड। मार्शियल स्कोर्ड अराउंड 17 or 18 ओले के साथ goals वैसा खेल रहे थे तो that season. मतलब तब इनके साथ तो तब रोनाल्डो नहीं था इसलिए शायद। so we'll see what I'm तो happens. pretty This is sure gonna he's be, a Messi fan, एक बहुत ही वो वाइब तो आ रहा है बोल ही यहाँ रहा है, पे। वो तो दिखा ही रहा है, वो उसने दिखा दिया है खुद ही। But yeah, come on, इसीलिए don't रोनाल्डो be hating on Ronaldo, man. He's नहीं he's I a have to star, like legend him. of the game. Yeah, have to I have to have to like किसी ने नहीं बोला, तेरी मर्जी है, free will है। जैसे मेरे को रोनाल्डो ज्यादा पसंद है मेसी से, so that's a topic for another day. likewise. That's a topic for another day. तो yeah, next moving on. Just finally, जिसकी बात नहीं कर रहे, जिसका नाम नहीं ले रहे हैं, वो अगर नहीं आया तो एक दो कुछ alternatives हैं दिमाग में that United should sign, because मैं खुद जाऊंगा यहाँ से जाके अभी अगर वो नहीं आया तो, मतलब it would be such a big embarrassment, you know, it will be. कि 2 months से ज्यादा we are linked to that player और वो आया ही नहीं in the end. मतलब सब अपनी थियरी लगा रहे हैं कि उसने सीक्रेटली बोल दिया है कि मैं आ जाऊंगा, सब होगा, बट इट इज, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग दैट आई हैव सीन अभी तक का, मतलब इवन वुडवार्ड के टाइम पे भी इतना नहीं, बट है ट्रांसफर विंडो नहीं, वो उसका इशू बहुत अलग है यार। फ्रैंकी का 17 मिलियन देने हैं, बार्सिलोना डजंट वांट टू पे दो 17 मिलियन इन सैलरी, अगर क्योंकि वो देंगे तो बाकी प्लेयर्स भी आएंगे कि मेरे को भी चाहिए सैलरी, तो मतलब इट्स
फाइनेंशियली वो जब तक बाहर नहीं होता तब तक वो प्लेयर साइन नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. सो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन. और क्या है, फ्रैंकी भी ना अगर बाहर आके ये बोल देगा कि मेरे को जाना है, देन इफ ही files a case against Barcelona later down the line कि मुझे पैसे नहीं मिले हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, तो बोल सकते हैं अरे ये तो जाना था इसको, मतलब इट मेक्स देयर केस स्ट्रॉन्गर. वो ये चीज पब्लिकली भी नहीं बोल सकता है. सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. बट आई थिंक बोथ पार्टीज वांट टू रिजॉल्व द. बार्सिलोना भी साइन नहीं कर पाएगी, रजिस्टर नहीं कर पाएगी किसी को, और बस उनको ये अपने 17 मिलियन बचाने हैं. आई थिंक दैट सिचुएशन हैज टू बी रिजॉल्व्ड. किस तरह से होगी वो रिजॉल्व, आई थिंक सो. I feel United could have been more aggressive in this case. Day one पे बोल देना था कि हम 17 नहीं देंगे, तुम कितना दे पाते हो पहले वो बात करते हैं, फिर बाकी का हम लोग तो दे देंगे. इसकी बात नहीं करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं. हमने बोला है ना नहीं करेंगे. बट एनी अल्टरनेटिव्स फॉर यू, जस्ट क्विकली शुशु, कि कोई भी तेरे को दिखता है कि वन प्लेयर हु यू थिंक फ्रैंकी डी जॉन्ग का अल्टरनेटिव हो सकता है? Ruben Neves from Wolves. Because he's not there is no other player who's as good as Frankie de Jong. जो पोजीशन के लिए अपन देख रहे हैं कि midfielder who could carry the ball आगे, you don't have that. So what we need is we need a CDM so that we can accommodate Van de Beek in the team, and he would be able to do that role what we are expecting out of de Jong. So I feel we need a player who would sit back and wait, not कि जाके commit कर दे और गलती कर दे जो McTominay करता है usually. Right. So I think Ruben Neves is the player that we should. और भाई McTominay तो वो सब गलती तो छोड़ ही दो भाई, वो पास के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता है. वो आदमी छुपता है यार पीछे प्लेयर के कि he's out of position most of the time. But one thing that I would like to mention is we missed out on gem of a player in Basuma जो टॉटनहम चला गया 25 मिलियन में, तो वो तो स्टील था उनके लिए. आई एम नॉट श्योर व्हाई यूनाइटेड डिडंट गो फॉर देम. अपने लिए शायद 30-35 मिलियन पूछते वो लोग, बट तब भी इट वुड हैव बीन अ वेरी डिसेंट डील. और वैसे ही करना था ना जैसे हम लोग बाकी कर रहे हैं. एक बार एग्री करने दो किसी क्लब को एंड देन गो एंड जस्ट snatch the deal. Exactly. तो वही कर रहे हैं अभी ये लोग. Exactly, we could have done that. But वो बहुत ही silently. See, I don't know. There's a issue यार. Bissouma को सब लोग बहुत ज्यादा शोर, and Bissouma always plays well against the top guys. इसलिए बिसूमा के फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा इन सेंस कि अरे बिसूमा का इतना नाम है. बट वो इसलिए है क्योंकि ब्राइटन मोस्टली प्लेज ऑन द काउंटर अटैक अगेंस्ट द बिग गाइज. तो वो मे बी दैट पार्ट जब पोजीशन गेम खेलने का है, हो सकता है बिसूमा इज नॉट दैट गुड इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द बॉल और मे बी जस्ट कीपिंग मूविंग देके 1-2 करके आगे निकलना और ये सब. तो मे बी इसलिए क्योंकि नन ऑफ द बिग गाइज वर इंटरेस्टेड यार. 35 मिलियन तो स्टील है यार, मतलब एक तरह से देखा जाए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं लोग. नहीं 25 में गया है वो. 25 भी छोड़ यार, मतलब व्हाट इज दैट 25? तो इट्स अ स्टील इन अ सेंस. तो मतलब नन ऑफ द बिग गाइज वर इन. इतने सारे टूचो मैनी 100 मिलियन दिए बंदे ने. मतलब क्या इंजरी प्रॉब्लम है? देयर इज समथिंग रॉन्ग इन बिसूमा. आई थिंक दैट्स व्हाई नाउ द बिग गाइज. नहीं, सो देयर इज कि उसके ऊपर शायद कुछ ग्रीनवुड टाइप ही केस शायद मे बी बाहर आया था बीच में. सो United don't want two of that, two people like that. Yeah, so I think that is the reason why big teams and their PR teams might have suggested कि भाई ऐसे players से थोड़ा दूर रहे तो better है. और बहुत सारे Ruben for you, Ruben Neves for you, which is I like him भाई. But उत्सव तेरे लिए भाई? I तो would have loved कि Garner would have stayed and played उस जगह पर, क्योंकि in the last season friendly only, मतलब he played so well against them. अभी नहीं है तो अदर और कौन है? I think there was some संगारे लिल का है, I think संगारे. हाँ, he is a good young talent. क्वालिटी है, लंबा है थोड़ा वो है, बट या दैट्स अ गुड ऑप्शन. या एक और है यार, एक नूनेस करके एक बंदा है. आई थिंक ही प्लेज फॉर स्पोर्टिंग और समबडी. आई थिंक दैट गाय इज आल्सो वेरी गुड. Okay. स्पोर्टिंग और but even I would agree with Utsav over here is that अगर गार्नर है तो nothing like that. But I'm pretty sure कि 19-20 साल का बच्चा है वो, तो पूरे मैचेस तो खेलेगा नहीं. We need someone who would play majority of the matches and who could groom Garner into that situation. Wherein I feel Neves is the best possible option क्योंकि he is Premier League friendly as well. He has played here, he knows how it works and will. देख मेरे को ऐसा लगता है कि सुश्रुत की मेरे हिसाब से अगर 75 मिलियन नेवेस के दे रहे हो ना आप, तो मैं तो बोल रहा हूँ 100 मिलियन के डेक्लन राइस के दे दो. फिर मतलब दे दो, फिर तो बेस्ट एट द पोजीशन लाओ ना फिर यार. फिर तो आप अगर दे रहे हो, हाँ अगर ऐसा है तो यार डेक्लन राइस तो बहुत महंगा है, इसीलिए वी आर नॉट इवन नोबडी इज टचिंग हिम. नोबडी, क्योंकि टीएम 100 मिलियन का कौन खरीदता है? मतलब रियल मैड्रिड ने खरीदा है, बट ही इज
they have also played for the, but he's 23 यार, captain है West Ham का, मतलब क्या ball carry करता है, distribute करता है, that is a possibility, fighter also. Yeah. West Ham मतलब attacking So, wise तो number 1 है. That will be my that will be my this thing कि अगर तुम 75 you giving for Ruben Neves, then 25 million डाल के और just get this guy. Definitely 100%. That makes a very fair point. Scotty को भेज दो 20 million में. कौन लेगा उसको? अरे 20 आजकल बहुत लोग हैं भाई. स्कॉटी का नाम तो है, यूनाइटेड के लिए खेलता है वो, ठीक है. तो I was surprised कि United जेम्स गार्नर 28 मिलियन या 11 मिलियन परेरा. जेम्स क्या नाम है उसका, क्या कौन सा जेम्स था वो भागने वाला? डैनियल हामिस 28 मिलियन में खरीदा लीड्स ने. तो आई थिंक दैट इज, बट आई थिंक इसके लिए मिल जाएगा 15 मिलियन तो मिल ही जाएगा ना यार. उसके बाद 10 मिलियन डालना है स्कॉटी के लिए, स्कॉटी टू हॉटी के लिए. स्कॉटी को कोई नहीं लेगा, मिल जाएगा कोई ना कोई भाई, ऐसा नहीं बोलते. चल एनीवे, फर्स्ट गेम वीक हम लोग खेल रहे हैं ब्राइटन एंड होव एल्बियन. So what are we seeing another winner after the final whistle? What looking like? You remember that game? Yeah, definitely. 3-0 और 4-0 जीत रहे हैं. नहीं, you remember that game Brighton के साथ जब हम yeah definitely I know. 3-0 4-0 ग्राम पॉटर की टीम के साथ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे? ग्राम पॉटर डेफिनेटली, क्यों नहीं, मतलब सी मोमेंटम इज हाई और ऑप्टिमिस्टिक तो रहना ही है, क्योंकि जितना भी हुआ है, आई वांट यूनाइटेड टू डू गुड इन द एंड. सो विद दैट इन माइंड आई वुड वांट a very good start at the start of the season, so hoping a win and 3-4 nil तो बहुत बड़ा boost रहेगा. तो so that is your prediction? Fingers crossed. 3-0 4-0. What is your prediction? We'll do this every week, so क्या है? Yeah, 100%. What is your prediction? 3-0. 3-0. Okay, Utsav? 3-0 to United. I'll go 2-0. 2-0. Yeah. To United. Okay. Or how about you? I don't know. I'll play it safe. 2-1. 2-1 United. पहला गेम है 2-1 United. I'll just be happy with a 1. 1-0 भी चलेगा मेरे को. सुमा है नहीं वहाँ पे अभी अपने midfield को. हाँ, exactly. But I'll be just happy with it. Just start with 3 points and just don't give me a fucking boring draw or a loss, please. That's it. Any type of win will do. So yeah. Loss अगर आ गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. Yeah, first as not, you not first game rightly mentioned at the start of the video कि बहुत मुश्किल हो गया अब यूनाइटेड को डिफेंड करने के लिए राइवल फैंस के अगेंस्ट. बस हिस्ट्री पे ही बात कर रहे हैं और कोई नए पॉइंट्स तो है नहीं. तो एक जस्ट बिफोर गोइंग हम लोग एक 11 बनाते हैं अपनी. who would we go for tomorrow's game? So De Gea in goal, that's for sure. तो I think करते हैं. De Gea in goal for sure, right? And then right back डालो. Left back पे किसको खिलाओगे, मलासिया या शॉ? मलासिया. शॉ तो खेला ही नहीं है कब से, फिट है नहीं है, पता नहीं. तो जो बंदा फिट है और तो कर रहा है उसको ही खिलाए. I think Shaw can start, but yeah, Malacia is a better option. Yeah, I think Malacia को खिलाना चाहिए ताकि शॉ को और थोड़ा सा झटका लगे कि अरे यार ये तो मेरे से आगे आ गया टीम में. I think that might fire his belly a little bit. तो वो भी है. और secondly, मतलब early games में you try these guys. शॉ तो टेलिस के आने से ही was like the best left back in the Premier League. Exactly. तो I think Malacia अगर वो बेंच हो जाता है तो फिर तो बीच में दो कौन है? एक तो मार्टिनेज है for sure. I think all of us would agree. Centre backs नहीं? Yeah, for sure. दूसरा we will keep a question mark X with but I think Maguire will start. I think Maguire will start. Lindelof. Yeah, I think Maguire will start. Maguire has to captain है. Yeah. बीच में सेंटर मिडफील्ड में you'd have Fred for sure, and then उसके साथ वैन डे बीक को रखोगे या स्कॉट को रखोगे? मैं वैन डे बीक को रखूंगा. या मैं भी स्कॉट सॉरी क्या नाम है उसका, वैन डे बीक. मैं भी वैन डे बीक के साथ जाऊंगा. I think he looked good in the
last 2 games. Passing Pre-season. अच्छी थी. Yeah, he was insane. Yeah. नहीं, second last और last game में तो बहुत अच्छा लग रहा था. दोनों गेम खेले थे I think उसने. क्योंकि वो build हो रहा है ना confidence and all. और He वो knows बीच how में it that is one supposed touch to be passing played. and Eric Ten Hag का system जानता है. I think it will be better for him to play. He's the best one touch passer in our team. Yeah. That तो is first for sure. so 4-2 और जो 3 खेलते हैं in the forward line before behind the strikers, वो कौन होंगे left, right and number 10? Bruno number 10, of course. 100%. Yes. Right पे Sancho, I think he's back from his illness. Left पे Rashford और Elanga, Rashford ही है ना? Rashford. और Garnacho. अगर वो होगा तो that would be a very wild move and I would like it. Yeah, I would respect Ten Hag उसके लिए. अगर उसने किया तो ये. बहुत bold एक It can go wrong also. Yeah. I will not mind if Garnacho is starting and if we go wrong. I don't mind. At least we are in for a change. Yeah, but he won't. He'll play it safe. But Rashford or ऊपर Martial is injured, so you have to play him. No, you have to play the big man. Who? The big man, the most highest goal scorer in of all time. You know his name. Football history. Say his name. Utsav, say his name. नहीं समझ गया. चलो ठीक है guys. I have had your predictions. Utsav is going 2-0 United. Shushu is going 3-0 United. And I'm going 2-1 United. So hopefully United win first game of the season. Guys, thank you. It was wonderful for a first podcast. I think we did pretty well. I think the audience in the comment box will let us know more about this. Or bhai logo, agar anything else if you want to talk about in this podcast going forward, we'll probably sort of talk about more teams. But yeah, United will be a focus because we're United fans. But game week mein jo bhi hota hai, अच्छा game uski baat to hoti hai because we are football fans also. So thank you for joining us, Utsav and Shushut. Pleasure having you, both of you. Likewise. Yeah, thank you guys. Something different that I did. अच्छा था experience. I was nervous, but probably my first thing what I did ever. Yeah, good man. Yeah, we'll hopefully hopefully people will like this our sacrifice as well. But thank you guys for watching, and whoever is watching, subscribe karo. The Sports Republic ko nahi kiya abhi tak, like the video and share it with the other Man United fans and other Premier League fans. और साथ में दर्द बांटो. एक प्रीमियर लीग का प्रेडिक्शन का वीडियो भी है that we have done. You'll find that in the description, the link of that video. So go watch that if you would want to gain a little more information before the start of the league. ठीक है guys, thank you for joining and we'll see you later. Yeah, so bye bye. Bye bye.